Hi guys, very good morning to all of you and welcome to all aboard. This is Aditya. I hope I am audible and visible to all of you clearly. So आज का हमारा सेशन होगा based on the discussion of current affairs of 28th of May. Starting in the same manner, let's start with the morning motivation. If you are prepared, you will be confident and you will do your job. That job can be anything. If you want to crack the examination, you will crack the examination confidently. Guys, एक चीज हमेशा याद रखिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हेन यू फील दैट द एग्जाम पेपर इज टफ, इट इज टफ फॉर ऑल. आई एम सीइंग दीज थिंग्स मल्टीपल टाइम, बट आई वांट टू पुट इट इन योर माइंड कि अगर एग्जाम टफ है बेटा तो वो सबके लिए टफ है और इजी है तो वो सबके लिए. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन. दिस इज द मैसेज for all the candidates, those who are going to write the ECGC PO examination. So best of luck from my side. Write your examination confidently. चलिए start करेंगे सेशन को. The session PDF will be available in the Telegram group of Aditya sir. You have to search GA Genius in the Telegram to find the PDF of this session. तो आपको इसका PDF मिल जाएगा इस Telegram group में. होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने अभी कंटिन्यू करे हैं. विल सी द आंसर्स ऑन मंडे. तो अभी आपको इन्हीं आंसर्स को और डिटेल्ड मैनर में अच्छे से लिखना है कमेंट बॉक्स में जाकर. क्वेश्चंस होंगे आपके पास. हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? After that, chairperson of Insurance Regulatory Development Authority of India, current chairperson of 7th Pay Commission, Company Law Board chairperson, National Stock Exchange chairperson. chairperson पूछा है CEO नहीं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चेयरपर्सन. तो चेयरपर्सन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इनके आंसर लगाइएगा आप कमेंट बॉक्स में और इनके आंसर्स हम डिटेल्ड में मंडे को डिस्कस करेंगे. ठीक, चलिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले दे दूं मैं कि अभी ऑलिव बोर्ड पर दैट इज 28th ऑफ मे इज द लास्ट डेट ऑफ ऑफर. तो आज आपका फाइनल डेट है दैट इज फॉर द सिलेक्शन सेल दैट यू कैन ऑप्ट at 50% off, or you can say that double validity is available at present. अभी आपके पास double validity at the same price. By using the code ADITYA Aditya, you can opt for the maximum discount. So go and grab your discount today and subscribe for the Olive Board courses or mock test. चलिए आगे मूव करेंगे. Those who are preparing for the SIDBI grade interview, for them also the course is available. They can go and opt for the course by using the same code Aditya. MCQ revision में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका. Consider the correct statement about World Economic Forum ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स 2021. देखो पहले तो यहां से ही क्वेश्चन बन रहा है आपका दैट रिसेंटली ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इश्यूज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और विच कंपनी, किसने इशू किया है. तो यहां से आंसर बनेगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. बट स्टिल इफ दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? द इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ 107 कंट्रीज. तो ये 117 कंट्रीज का 117 कंट्रीज का इंडेक्स है. ये आपका पॉइंट नंबर 1 हुआ. इंडिया इज द टॉप स्कोरर इन साउथ एशिया, 73rd place in the world. 2019 the rank of India was 46th position. On the top position Japan is located, or Japan grabbed the top position. ये आपके पास 3 points हैं. Now on the based of 3 points you have to decide your answer. Okay, so the correct answer is option number 1 and option number 3. Second is wrong. Why? Because we know this thing, the rank of India is 54 एट द वर्ल्ड लेवल, नॉट 73rd. अभी 73rd रैंक नहीं है इंडिया का. इंडिया का रैंक क्या है? 54 है वर्ल्ड लेवल पर. ठीक है, फुल डेटा अगर हम देखें यहां पर तो टॉप पोजीशन जापान करेक्ट है. इट इज अ इंडेक्स ऑफ 117 कंट्रीज करेक्ट है. बट द रैंक ऑफ इंडिया इज 54 इन दिस. 2019 the rank of India was 46. So the top countries are Japan followed by US, Spain, France and Germany. These are the points. And reminding again guys, the rank of India is 54. तो इंडिया का रैंक क्या आया है? 54 आया इस इंडेक्स में. Here you have the list. And the theme of World Economic Forum Travel Tourism Development Index 2021 is rebuilding for the sustainable and resilient future. तो theme भी important होगा. You should go through with the theme also properly.
here the rank of India in the different indexes in the year 2021-22 it will be available in the PDF. तो आप PDF के थ्रू इसको कवर कर सकते हैं. I told you the PDF will be available on the Telegram group. Next question. Which state has become the first Indian state to roll out drone in the healthcare sector? So correct answer है उत्तराखंड. We have discussed this news in detail in the previous TNA कि उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने कि जो टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, तो जो सैंपल कलेक्शन होता है, सैंपल कलेक्शन के लिए ड्रोन्स का यूज करना स्टार्ट किया है. सो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर फॉर द सैंपल कलेक्शन ड्रोन हैज बीन स्टार्टेड यूजिंग. तो ड्रोन्स का यूज स्टार्ट हुआ है. द कंपनी नेम इज रेडक्लिफ लैब. So Radcliffe Lab is the name of company which is implementing this project in Uttarakhand. So it is implemented between Uttarkashi to Dehradun at the distance of 114 kilometer. जहाँ पर 6 to 8 hour का journey होता है. That will be covered in 88 minutes only. So twice a day this flight will be, this drone flight will be the routine flight that will be started from 10th of June. Twice a day this flight will be conducted. ठीक है. देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसन समर कैपिटल उत्तराखंड का. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है ये गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी सर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड ऑन डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर डोमेस्टिक ट्रेड करने वाली पहली इंडियन ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी कौन सी है सर? तो करेक्ट आंसर होगा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. ONGC पहला कंपनी है जिसने गैस परचेस के लिए प्लेटफॉर्म यूज किया है. इंडियन गैस प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज किया है, दैट इज इंडियन गैस एक्सचेंज. हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ONGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. अलका मित्तल मैम जो है वो अभी करंट में ONGC की CMD है, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है. नेक्स्ट है Who has won the Spain Grand Prix 2022 at the Circuit de Barcelona? Correct answer is Max Verstappen. So Max Verstappen was the winner. ये winner थे. अगर अभी हम 2022 के F1 races देखें, so you will be able to find Mr. Charles. He is the winner of Bahrain and Australian Grand Prix. While Emilia, Miami, Saudi and Spanish, these 4 Grand Prix won by Max. So Max is the winner of 4 Grand Prix. So if you will learn in this manner, it will be easy to remind for the examination as well. आगे चलते हैं. Shirley Lily festival is being celebrated in which of the following state? This is the question of static GK from the current affairs. Current affairs से आपका static GK क्वेश्चन बनता है. करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका मणिपुर. So the aim is to aware and raise the awareness related to Shirley Lily flower of Manipur, which is the state flower of Manipur as well, जो कि मणिपुर का स्टेट फ्लावर भी है सर. नेक्स्ट है the name of Indian who has found his name in the Time magazine list of 100 most influential people of the year 2022. Correct answer is all of the above. So Gautam Adani, Khurram Parvez and Karuna Nandi, these are the name of 3 Indians. Those names are listed in the most influential 100 people of 2022 list of Times. तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं करुणा मैम. बिजनेस टाइकून गौतम अदानी, एवरीवन नोज हिज नेम. थर्ड नेम इज कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है मिस्टर खुर्रम परवेज. सो दीज 3 आर द इंडियंस. दोज आर लिस्टेड इन द नेम ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of May को ऑब्जर्व होता है. इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड इज द थीम ऑफ 2022. Which health speed ठीक है. Which health union territory has undertaken the unique initiative of using robot for the
for the firefighting purpose. These two robots for the firefighting fleet included by which of the following state? तो दिल्ली ने इनको include किया है. This news, guys, every news has been discussed in the TNA in very detailed. So if you will watch the previous TNA, you will be able to find all of these news. तो yesterday और day before yesterday के TNA में आपको ये सारे news मिल जाएंगे. If you will go through with them in detail. Today is just the revision. That is why I am keeping it quick. So Delhi related points. Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal sir submitted the resignation. If you know the name of person who has been appointed as the new लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट हुए, आपको नाम पता है. एंड ही वाज करेंटली वर्किंग ऑन द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. वो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन भी थे. तो उनका नाम बताइएगा और उनके चेयरपर्सन, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन थे वो बताइएगा. Delhi, India's first Khadi Center for Excellence will be open in Delhi. After that, the Lokpal of India will be finally moved to the World Trade Center in the South Delhi, in नारोजी नगर में साउथ दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऑफिस में मूव किया जा रहा है लोकपाल ऑफिस ऑफ इंडिया. ठीक है. पिनाकिन सर जो है वो अभी इंडिया के करंट लोकपाल है, फर्स्ट एंड करंट लोकपाल. So these are the points related to Delhi which you can also revise with the help of PDF. अच्छे से आप PDF से रिवाइज करिएगा. मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ न्यूज के तरफ. न्यूज नंबर 1 रिलेटेड टू द इकोनॉमी. Moody's Investors Service decreases the GDP rate of India. इन्होंने GDP rate prediction जो है उसको डिक्रीज किया. By the way, yesterday I have already shared the PDF of updated GDP rate of India. Only one PDF related to all the organizations and the prediction given by them for the GDP rate of India. It was shared on the Telegram group. So if you will check the Telegram group of mine, in the file option you will be able to get the PDF. You can download it from there and update it for the Moody. Moody Investors Services slashed the India's economic growth rate to 8.8% from the previous prediction of 9.1%. So previous prediction was 9.1, वहां से decrease करके 8.1% कर दिया है GDP rate India का, because of high inflation. Now the problem is one more data now we have to remember, the data of inflation rate. So this organization also projected the inflation rate of India for the financial year 22 and 23. So for the financial year 22, the inflation rate projected at 6.8%. By the way, for the financial year 23 it is predicted at 5.2%. तो ये inflation rate का भी डेटा मूडी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी कवर कर लेंगे. आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड टू MOU. India and UAE have signed the MOU to establish a framework for facilitate enhanced bilateral cooperation on the climate action. So India and UAE will be doing the trade in that manner that they can support the Paris Agreement where all the countries have agreed towards moving towards the net zero carbon emission by the year 2070. 2070 तक net zero carbon emission की तरफ हम move कर पाएं. So this agreement has been signed by the Environment, Forest, Climate Change Minister of India, Mr. Bhupendra Yadav ji, UAE Climate Envoy Minister of Industry Advanced Technology, Dr. Sultan Al Jaber, Mr. Sultan Al Jaber in New Delhi. So this MOU was signed in New Delhi. This MOU is based on facilitating enhancing the bilateral cooperation on the climate action, also to contribute toward implementing the Paris Agreement. जो मैंने बताया ना कि Paris Agreement की तरफ, मैं कैम ऑफ करूंगा आपको पूरा दिख जाएगा कि Paris Agreement की तरफ कैसे हम मूव कर पाएं, कैसे हम टारगेट्स को अचीव कर पाएं टू बिकम द नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बाय द ईयर 2070. सो इंडिया एंड यूएई विल बी कोलैबोरेटिंग टुगेदर to reach this path together. Now India and UAE, where these countries were in news together or recent time UAE in news. तो वो सारे पॉइंट्स हम रिवाइज कर लेंगे एक साथ, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेक्स्ट 3 स्लाइड्स, तो अच्छे से कवर करिएगा नेक्स्ट 3 स्लाइड्स. Adani Sports Line, a division of
Adani Group, that is the sport division of Adani Group, created history by gaining right to own manage the franchisee in UAE top T20 competition. So in top T20 league, like in India we are conducting IPL, राइट? इंडिया में जैसे आपका IPL कंडक्ट होता है ना, वैसे यूएई कंडक्ट कर रहा है, इसको नाम दिया है उन्होंने T20 competition, top T20 competition. So Adani Sport Line is the first Indian company which have acquired or bought a फ्रेंचाइजी टीम इन यूएई में फ्रेंचाइजी टीम बाय करने वाली पहली कंपनी बन गई है अदानी. आफ्टर दैट एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, रितेश शुक्ला सर सीईओ हैं. दिस organization implemented UPI Bheem UPI at NeoPay terminal in across platform of UAE. तो UAE में नियो पे के हर एक प्लेटफॉर्म पर यूपीआई भीम को इंप्लीमेंट कर दिया गया है. व्हाट इज द लिमिट ऑफ भीम यूपीआई टू ट्रांसफर मनी? रिमेंबर दिस पॉइंट, द लिमिट ऑफ भीम यूपीआई टू ट्रांसफर मनी इज 1 लाख रुपी. यूपीआई लिमिट इज 2 लाख. भीम जहां पर लगा होगा देयर द लिमिट विल बी 1 लाख रुपी. नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया will be starting the first IIT out of India in which country? एक क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया अपना पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर कहां पर ओपन करने जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इज यूएई. रिपीटिंग अगेन इन इंग्लिश कंप्लीटली, इंडिया स्टार्टिंग देयर फर्स्ट IIT आउट ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? सो करेक्ट आंसर इज यूएई. नेक्स्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूनियन Supreme Council of Union selected Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan as the president of UAE after the death of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. This news we have discussed, I think, a week before in TNA, that Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan passed away, and after that his son Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan became the president of UAE. Next point is, UAE is the first country in the world to announce that from 1st of January 2022 onwards, the working day in the UAE will be 4.5 days. Instead of 5 working days, 4.5 days will be the working days in the UAE. One more point, Ahmed Nasir Al Rashi of UAE appointed as the president of Interpol. Interpol headquarters located in Paris. Appointed as the president of Interpol for the duration of 4 years. इन्होंने replace किया है Kim Jong Yan को, who is from South Korea. So Kim Jong Yan, who is from South Korea, replaced by Ahmed Nasser Al Rashi. So these are the points, guys. One more point, one more page related to India and UAE. India, Israel, UAE and United States decided to launch new quadrilateral economic forum. Like they will be giving preference for the export and import to each other, these 4 countries. Shanghai based New Development Bank recent members are UAE, Uruguay, Bangladesh and Egypt. So previous there were 5 members, recently included 4 members. Now the total number of members in New Development Bank came to 9. तो अब total members कितने हैं सर इसमें? तो total 9 members हैं. ठीक है. Next है, India can become the first organic farming country by the year 2040. Recently announcement हुआ. The announcement was made by the former Chief Minister of Sikkim, Dr. Pawan Kumar Chamling. He said that during the 3-day expo of 3rd Global Organic Expo that was held in New Delhi. तो एक separate question हो गया, which edition of Global Organic Expo conducted in New Delhi? 3rd edition. 3rd edition of Global Organic Expo conducted in which city? New Delhi. So during this event, Pawan Kumar Chamling sir has announced that if India will take a step, India can become the completely organic country, the first organic country in the world, organic farming country in the world by the year 2040. तो ये हमारे लिए हो जाएगा एक तरीके से डेडलाइन वाला क्वेश्चन. ठीक है. Lakshadweep recently became the first union territory in India. याद रखेंगे, Lakshadweep became the first union territory in India and only second state or UT in India after Sikkim. अभी तक सिक्किम फर्स्ट था, उसके बाद लक्षद्वीप हमारे पास सेकंड यूटी बना है. और ओवरऑल स्टेट और यूटी देखे जाए तो ओनली सेकंड स्टेट और यूटी इन इंडिया टू बिकम द कंप्लीट ऑर्गेनिक इन टर्म ऑफ फार्मिंग. सो सिक्किम वाज फर्स्ट, लक्षद्वीप इज सेकंड. नेक्स्ट न्यूज सर, अगला न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक स्कीम भी डिस्कस करेंगे हम.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's biggest drone festival, Bharat Drone Mahotsav in New Delhi. कहाँ पर inaugurate किया? तो New Delhi में. During this time, PM Modi said that the use of drone played a vital role in the development of or implementation of any scheme. The great example is Swamitva scheme or Swamitva Yojana. Now guys, this Swamitva Yojana came in current affairs. So in the upcoming examination, we may expect question from this old scheme also because it came back in the current affairs. Recently news में आया है. So I'll discuss this Swamitva scheme also just next to this news. So just wait. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia said that drone industry estimated to reach 15,000 crore rupee turnover by the year 2026. He said that today there are 270 drone startups in India. अभी इंडिया में approximately 270 drone startups already working है और 2026 तक 15,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री बन जाएगा. You know this thing that for the drone industry, PLI, production link incentive बजट एलोकेशन इज 120 करोड़ रुपए, राइट. 120 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है पीएलआई में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर द ड्रोन इंडस्ट्री. भारत ड्रोन महोत्सव will prove game changer, making India as the drone hub of world by the year 2030. देखो सर, डेडलाइंस ही डेडलाइंस मिलते जा रही हैं, ये क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन में. सो बाय द ईयर 2030 इंडिया मे बिकम द ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, अभी आपके पास एक न्यूज आया रिलेटेड टू स्वामित्व स्कीम. सो फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्व इज सर्वे ऑफ विलेज, आबादी, मैपिंग and improvised technology in the village area. So this is a type of survey of villages, digital mapping and survey of villages, which is conducted with the help of different technology including drone to collect the property data. तो drones का यूज किया गया इसमें. This Swamitva scheme was launched by PM Modi on 24th April 2020 for the village mapping purpose, digital village mapping purpose by the use of drones. So this is implemented on the pilot basis in Maharashtra, Karnataka, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Punjab and Rajasthan. So these are the states in which it is implemented in the initial phase. So the date on which it was started, what was the use of this scheme, on which this scheme was implemented, and what is the full form of scheme. Any of the one question you may expect. Next है, and 5-star plus rating question. Very very important question. 5-star plus rating question. Hindi author Geetanjali, just a second, I'm back to screen, right? Yeah. So in Hindi author Geetanjali Shri novel Ret Samadhi, in English it is translated to Ret Samadhi, translated to Tomb of Sand. Tomb of Sand won the International Booker Prize, became the first novel translated from Hindi so far to win the International Booker Prize. अभी तक का पहला नॉवल है जो कि हिंदी से ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ है और उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है. गीतांजलि श्री इज द नेम ऑफ ऑथर, तो इसीलिए आपको ऑथर का नाम भी याद रखना है. And it is the first novel, so novel name as well. Now Geetanjali Shri, The Tomb of Sand, translated from Hindi by Daisy Rockwell. Daisy Rockwell, here is the pic of Daisy Rockwell. So Daisy Rockwell is the translator of this novel from Hindi to English. They won the prize money of 50,000 pound that will be shared in between the authors and translators equally. दोनों के बीच में equally translate किया जाएगा. नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स के कैटेगरी में. द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जालान सर राइट्स अ न्यू बुक कॉल्ड द इंडियन हिस्ट्री, द इंडियन स्टोरी. So the former RBI governor Bimal Jalan sir recently wrote a book. The book name is The Indian Story. The previous book was Beyond the Matrix of Economy, to talk about the role of governance implementing these politics. He is also the author of book Indian Then Now the India Ahead. This was the name of book authored by him previously. One more book was in news recently. The book
titled Listen to Your Heart, The London Adventure. The book is authored by Mr. Ruskin Bond. Do you remember that the first book of Mr. Ruskin Bond was The Room on the Roof? It was the first book. And Mr. Ruskin Bond has been honored with Padam Shri Award in 1999, Padam Bhushan Award in 2014, respectively. Central government released the amount of 324 crore rupee from State Disaster Relief Fund for the flood hit Assam. तो flood hit Assam के लिए 324 करोड़ रुपए का फंड जो है वो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है. Government decided to call off the present expression of interest process in the strategic disinvestment of BPCL. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था दैट दे आर गोइंग टू डू द डिसइन्वेस्टमेंट. But due to the current scenario of the oil industry in the world, now they said no, we are not going to do the disinvestment. So it is a good news for the bankers as well that government is taking back their decision related to the disinvestment regarding the public sector companies. So maybe they have announced a few banks that they are going to become the private in the future. Maybe they will take back their decision related to the privatization of public sector banks as well. So Uttarakhand has signed MOU with which company for the development of new and renewable energy project in the state? Correct answer is BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, Maharashtra headquarter है. Arun Kumar Singh sir is the director of BPCL. Points related to Uttarakhand you guys can revise with the help of PDF. It will be there in the PDF. I told you that the PDF you can download with the help of Telegram group Aditya Sir GA Genius. Recently, Prime Minister Narendra Modi has formalized its entry into Indo-Pacific Economic Framework that is made by United States of America. So now there are total 14 countries including India. Previously there were 13 countries in this group. Now there are total 14 countries in India. These countries will be working together to improve the business in between them. So the dominance of China can be decreased in the Indo-Pacific economic region. तो Indo-Pacific region में इंडिया का और बाकी कंट्रीज का जो ग्रोथ है और बिजनेस है वो इंक्रीज हो पाए और चाइना का जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज हो पाए, इससे रिलेटेड ये पॉइंट है सर. सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड फॉर द डे गाइज. You guys can download the PDF from the Telegram group, and I know that you guys have already find that this session is not live and sir is giving the video of this session. So it was the premiered session. I'll be meeting you back on Monday morning live in the TNA. Till that time guys, keep watching All Aboard. Jai Hind.